welcome back to my channel again. Faith over noise. I know it's been a very long time. ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते से ऊपर हो गया है जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज फिर से I'm going to put a video in there. And today we're going to talk about again a very real weird topic, a very common topic, जिससे आजकल काफ़ी लोग नो so I'm going to talk about the priorities. So what I believe is like keeping the things into a right priority is very very important. कि हम किस चीज़ को किस प्रायोरिटी में रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. What I believe personally is our priority should be always what I believe is like first we have to keep the God first, and then your family, and then after all the things has to come. That's what I believe, and that's what I follow. मेरे लिए सबसे पहले परमेश्वर, फिर मेरा परिवार, and then after I'm having the different things are there. लेकिन the biggest problem comes कि स्पेशली पीपल थिंक्स कि मैं अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले पैसा रखूँगा, बाद में मैं परिवार को टाइम दूंगा, बाद में ये करूँगा, बाद में वो करूँगा. देन इट्स नॉट राइट एक्चुअली. हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमें रचने वाला हमारे परमेश्वर हैं, और हमें उनको हमेशा हर एक चीज़ों में आगे रखना चाहिए. उसके बाद हमें अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. परिवार में हमारे बच्चे, बीवी, सबको रिस्पेक्ट करना, सबका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है. तो जब आप परमेश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद जब बाकी चीज़ें आप करते हैं तो गॉड इज़ इन कंट्रोल. गॉड इज़ कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग इन देयर. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. So if you are tired, if you are confused, if you're thinking about that what my priority is, I just want to say, and I just want to encourage, keep the priority God first. That's what David did. That's what Daniel did. That's what Paul did. That's what Peter did. Everyone. If you look from the Bible, the heroes of the Bible, if you look and read the stories of them, they have given the first priority to God. So I want to encourage you all. Don't get confused. Keep the first priority to God, and the rest the God will going to do. Whatever things will come in front of you, whatever the problem you're going through in there, if you're keeping the God first, God will going to take care of you, and He loves you, is with you. So don't worry. Okay, so if you like this video, do subscribe my channel, like this channel, share this channel, and be ready for the next video soon. Thank you. Bye bye. God bless you.